Okay, now we are moving on to the next case study, the case study number 5 from the chapter Principles of Management. Let's read through the questions first. आपको बोला है identify and explain the concepts of Fayol and Taylor described in the paragraph above by quoting the relevant lines. Right? बोला है Fayol और Taylor दोनों के ही जो principles ऊपर पैराग्राफ में दिए गए हैं उन्हें आइडेंटिफाई कीजिए और एक्सप्लेन कीजिए. लेट्स रीड थ्रू द सेंटेंस और आपको इसमें लाइंस भी कोट करनी है. तो लेट्स रीड थ्रू द पैराग्राफ. देयर आर अबाउट 100 एम्प्लॉइज वर्किंग इन नीरजा पापड़ उद्योग प्राइवेट लिमिटेड. There has been going on a dispute between the management and workers over the division of profit. Recently, Mrs. Gurpreet Kaur has taken over the charge as the managing director of the company. Soon after taking over the charge, she made a deep study of present status of the company. She held a number of meetings of all employees, each after a little interval. In the meetings, she advised the employees, we should run after not the profit but production. Management and employees are the two wheels of carriage of organizations. This carriage will run effectively and efficiently only when both the wheels work properly. We both complement each other, or we both are in need of each other. The organization will grow and its goodwill in the market will increase only when we both are happy. She also assured the workers that all of them would get as much remuneration as is necessary to maintain a reasonable standard of living. Besides, she also added that a fixed percentage of the company's profit would be divided with the workers. What Mrs. Kaur said had a favorable impact on the employees. The company's problem, which had continued since long, disappeared or was resolved in no time. I think so after reading up this particular paragraph, it is quite clear that since हमने यहाँ पे कहा कि हमें प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना चाहिए बट प्रोडक्शन और क्वालिटी के पीछे रहना चाहिए. हेंस वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल रेवोल्यूशन. राइट, हम लोगों को एक प्रॉपर प्रोटेक्शन माइंडसेट देते हैं जिससे वो सेफली यहाँ पर काम कर सकें, अच्छे से यहाँ पे काम कर सकें. नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर उन्हें बोला है कि वो जो भी काम करेंगे उसकी रेम्यूनरेशन उन्हें अच्छी मिलेगी. दे विल बी पेड वेल, जिससे उनकी अच्छी लिविंग दे कैन अर्न. एंड हेंस वी आर टॉकिंग अबाउट रेम्यूनरेशन. We are talking about remuneration principle of Henry Fayol. Right? Reasonable remuneration. So let's jot down the answer for this particular case study. This is case study number 5 that we are discussing. Right? So the first principle that we can identify is mental revolution. This is one of the principle given by F.W. Taylor. जो लाइन्स हमें बता रही हैं ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल, ये हम लिख सकते हैं that we should run after not the profit but production. राइट, हमें प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना चाहिए, प्रोडक्शन के पीछे भागना चाहिए, हमारी क्वालिटी के पीछे भागना चाहिए. राइट, एज पर दिस टेक्निक गिवन बाय F.W. Taylor, it implies bringing together a change in state
or mind of the management and workers as may encourage them to cooperate in the effective working of the organization. Right? Moving on, the second principle of Henry Fayol, one of the principles of Henry Fayol that we can identify is remuneration. Paid to employees, जिसका नाम remuneration भी है. हमें पता चल रहा है ये कहाँ से, She also assured से लेके standard of living तक. Right? Henry Fayol focused on just and fair payment or remuneration to be paid to all the employees of the organization. This will encourage them to work with more enthusiasm. Moreover, it will enhance their working by paying them reasonable remuneration. Right? Okay, now we are moving on to the next case study. The next case study is again from the book R.K. Singla, and let's read through the questions first. Which technique of scientific management is being practiced by the company in the above paragraph? मतलब आपको एक scientific management की टेक्निक बतानी है जो कि above paragraph में फॉलो की गई है. Quoting the lines, identify that function of management which is called essence of management. एक आइडेंटिफाई करना है आपको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जिसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं. ये तो हमें आंसर से ही पता चल गया कि इट इज़ कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेशन है तो हमें बस इसमें लाइंस भी स्टेट करनी है कि कहाँ से हमें पता चल रहा है कि कोऑर्डिनेशन हो रही है कंपनी में. उसके साथ साथ थर्ड पार्ट कह रहा है विच प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल इज बीइंग फॉलोड बाय द कंपनी. हेनरी फेयोल के कौन से प्रिंसिपल को ये कंपनी फॉलो कर रही है.
So moving on, let's read through this case. इसका paragraph read करते हैं. Mr. Radha Krishnan Kher is the production manager of Krishna Milk Products Private Limited. He is producing several milk products. Various alternatives are available for producing each product. It is the endeavor of Mr. Kher that best and cheap alternative be adopted in the production. He has made a special arrangement in his department. According to it, a proper place will be earmarked for everything used in the production department. He has also directed the employees of the department that everything should be available at its decided place. There is a provision for awarding punishment to those who ignore this direction. All activities of Mr. Kher's department are closely related to each other. To maintain balance among them, he makes special efforts so that there is no obstruction in production. Okay, so इसमें अगर हमें टेक्निक पता करनी है तो टेक्निक इसमें है मेथड स्टडी के बारे में. आप देख सकते हो कि बेस्ट चीपेस्ट मेथड अप्लाई किया जाता है बाय द कंपनी टू प्रोड्यूस थिंग्स. अगर हमें कोऑर्डिनेशन के बारे में पता करना है तो कोऑर्डिनेशन में आपको बताया हुआ है, इसमें एक लाइन लिखी हुई है, ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ मिस्टर खेर्स डिपार्टमेंट आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर. एक दूसरे से रिलेटेड है. उन सब में बैलेंस मेंटेन करने के लिए वो कोशिश करते हैं कि कोई भी ऑब्स्टिकल ना आए, इसीलिए वो बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं थ्रू आउट देयर इट्स हिज ऑर्गेनाइजेशन. एंड द थर्ड पार्ट, अगर हम बात करें हेनरी फेयोल का जो प्रिंसिपल इस पर्टिकुलर केस में फॉलो किया गया है तो दैट वुड बी ऑर्डर. राइट, ऑर्डर क्यों हमने बोला इसमें? ऑर्डर हमने इसलिए बोला क्योंकि आप सारी की सारी चीज़ें जहाँ पर हैं, सारी जगहों का ईयर मार्क प्लेसिंग है. सब जगह everything is placed at its place and things are done accordingly. Right? So let's write down the answer for this. So answer the first part. Answer for the first part. Answer for the first part. The technique of scientific management identified is method study. Main objective of method study is to find out best way of doing the job. Now हमने ये जो explanation लिखी है ऐसा हमें क्वेश्चन में करने के लिए बोला तो नहीं था, लेकिन अगर हम ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कर देते हैं इफ़ वी हैव टाइम सो इट विल डेफिनेटली गिव एन इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर. हमें थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है, थोड़ा बेटर लगता है इन प्रेजेंटेशन. सेकेंड पार्ट कह रहा है कोट करिए लाइंस और एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो कि एसेंस है मैनेजमेंट का, उसको आइडेंटिफाई कीजिए. सो इन द सेकेंड पार्ट, the function of management that is the essence of management which can be identified is coordination. लाइंस हमें जहाँ से पता चल पा रहा है वो है ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ
ऑफ मिस्टर खेर से लेके ऑब्स्ट्रक्शन इन प्रोडक्शन तक. Right? And the third part of the question says हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल एक स्टेट फाइंड आउट कीजिए, स्टेट कीजिए. द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल identified is order. Principle of order. हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल people, material, and objects should be placed at ear-marked places to save time and work effectively and efficiently. Right? इसमें ये भी था कि हम अपनी पावर्स, अपनी एनर्जी को सारी बेकार की एक्टिविटीज़ करने में यूज़ नहीं कर रहे हैं. राइट? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट्स इन द आंसर. इस चैप्टर से हम लोगों ने मेजर बड़ी जो केस स्टडीज़ हैं वो तो बुक्स में जो अवेलेबल हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं. इसके अलावा इस चैप्टर में से काफ़ी बार छोटी छोटी केस स्टडीज़ भी आती हैं 3 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में. राइट? तो या 1 मार्क में भी काफ़ी बार केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए भी केस स्टडीज़ आती हैं फ्रॉम दिस चैप्टर. सो थोड़ी बहुत 2-4 केस स्टडीज़ हम उस टाइप की डिस्कस कर लेते हैं and then we can end this particular chapter's case studies. So moving on to the next case study, let's read through the questions first. ये एक 4 mark का question है. With what principle of management is being violated here? Violated से इधर हमारा कहने का मतलब है कौन सा प्रिंसिपल हम लोगों ने इस पर्टिकुलर केस में फॉलो नहीं किया है. वायलेशन का मतलब होता है इधर when we are talking about violated या violation मतलब फॉलो नहीं हुआ है. राइट? कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ है. यू हैव टू रिमेंबर दिस मीनिंग. व्हाट अफेक्ट दिस सिचुएशन विल हैव ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी. क्या अफेक्ट होगा कंपनी के ऑब्जेक्टिव में इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल की वायलेशन से या जो काम कर रही है उससे. What suggestion will you give for improving this situation? आप क्या suggestion देंगे इस particular situation से बाहर निकलने के लिए कंपनी को. Okay, let's read through the passage. Mr. Shyam Sundar has recently been appointed general manager of Om Auto Parts Limited. Immediately after appointment, he undertook a round of the factory. He found that stationery is not at its specific place in the office, nor are the employees available at the proper place. He realized that everything there was in a state of chaos. तो ये हमने just अभी discuss किया. It is we are talking about principle of order given by Henry Fayol. So let's start writing the answer as well. The principle of management that has been violated in the given passage is principle of order.
principle of order. Right? Second point जो हमें कह रहा है इस question में, what effect this situation will have on the objective of the company. If there will be chaos or things will not be at its positions, it will affect its, क्या affect करेगी सबसे ज़्यादा? Efficiency and effectiveness. It will affect its efficiency and effectiveness. Right? Third चीज़ जो हमें बोली है, what suggestions will you give for improving this situation? आप क्या suggestion देंगे? It is suggested all things must be kept at a fixed place. All the employees must be seated at their allotted places to avoid chaos and confusion. Confusion and chaos को avoid करने के लिए सारे एम्प्लॉयज़ को अपनी ईयर अपनी पोजिशनड प्लेसेस पे ही रहना चाहिए और जो थिंग्स हैं उसे भी उसकी प्लेस पे ही रहना चाहिए. राइट? I hope this particular case study is very clear.